नमस्कार दोस्तों, गुरुवार देर रात पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर भारत के खिलाफ नापाक साजिश रची गई। पाकिस्तान ने करीब 400 ड्रोन के जरिए भारत के 36 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा प्रणाली खासकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। भारतीय वायु सीमा में एक भी ड्रोन को असरदार घुसपैठ करने नहीं दी गई। विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान ने हमले के दौरान अपने नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जब दोनों ओर से जवाबी कार्रवाई हो रही थी, उस समय पाकिस्तान ने जानबूझकर अपना हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। इसके बजाय कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में पैसेंजर प्लेन उड़ान भर रहे थे। इससे आम नागरिकों की जान को गंभीर खतरे में डाल दिया गया। यह इंटरनेशनल एविएशन लॉ का भी सीधा उल्लंघन है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ। कर्नल कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से LOC पर भी भारी गोलाबारी और हथियारबंद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। टंगधार, उड़ी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर जैसे इलाकों को टारगेट किया गया। इसके चलते कुछ भारतीय जवान शहीद हुए और कई घायल भी हुए। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 एयर डिफेंस साइट्स पर हथियारबंद ड्रोन से जवाबी हमला किया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन AD रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। इनमें से एक ड्रोन ने पाकिस्तान की एक अर्ली वार्निंग रडार को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान के यह हमले भारतीय नागरिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर को लक्षित करते हुए किए गए थे। हमारी जवाबी कार्रवाई उचित, सटीक और जिम्मेदार रही। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसने किसी धार्मिक स्थल पर हमला नहीं किया, लेकिन वास्तविकता इससे उलट है। उन्होंने आगे बताया, कल हमने एक गुरुद्वारे पर हुए हमले की जानकारी साझा की, जिसमें पाकिस्तानी हमले में पुंछ में एक रागी समेत कई स्थानीय सिख समुदाय के लोग शहीद हुए। पाकिस्तान अब इस हमले की जिम्मेदारी लेने की बजाय उल्टे भारत पर आरोप लगा रहा है। यह एक शर्मनाक और झूठा प्रयास है जो उनके आक्रामक इरादों को छिपाने की कोशिश है। You're right. Bahawalpur is the headquarters of the Jaish-e-Mohammed terrorist group that is proscribed by the United Nations. Its leader, Maulana Masood Azhar, is a proscribed individual.
It is you brought up the connection with the tragic death or killing of Daniel Pearl of the Wall Street Journal. The Jaish-e-Mohammed was in some way directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. But the real connection is through Ahmed Omar Saeed Sheikh, the British Pakistani jihadi who was held in India but was finally released in 2000, and he was the person who lured Daniel Pearl to his eventually leading to his murder. So these are all obviously connected figures, connected individuals, connected institutions, and the attack on Bahawalpur, on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident. Yes, the minister had a conversation with the US Secretary of State. As you can imagine, the focus of discussions was the terrorist attack in Pahalgam and the response that India mounted after that on the 7th of May. The Secretary of State shared his thoughts on these developments with the minister. The minister deeply appreciated the US's commitment to work with India in the fight against terrorism, and he also underlined the targeted measures that India had taken in connection with Op Sindoor. The minister also underlined that India would firmly counter any attempts at escalation from there. But in follow-up to that, as you are aware, there have been a number of other conversations. The minister had a conversation with the UK Foreign Secretary, David Lammy, today. There too, the discussion centered around countering terrorism, for which there must be zero tolerance. And I understand just a short while ago, the External Affairs Minister has also spoken to the Foreign Minister of Norway, Espen Barth Eide, which was also focused on recent developments stemming from the terrorist act. We do have some information about this extremely regrettable and condemnable incident. During heavy shelling across the line of control in the early morning of 7th May, a shell fired from Pakistan landed just behind the Christ School run by the Carmelites of Mary Immaculate congregation in Puj. Tragically, the shell fired from Pakistan hit the home of 2 students of the Christ School. Both students unfortunately lost their lives and their parents were severely injured. Another Pakistani shell struck a Christian convent of nuns belonging to the congregation of the Mother of Carmel, damaging water tanks and destroying solar panel infrastructure. Several priests, nuns, school staff, and local residents took refuge in an underground hall beneath the Christ School during the shelling by Pakistan. The school happened to be closed at the time, fortunately. Otherwise, more losses would have occurred. Again, we have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. This is a new low even for Pakistan. I think you're all aware of the situation along the entire India-Pakistan border and the areas around the line of control. In view of the existing security scenario, the services of the Kartarpur Sahib corridor have been suspended till further directions. We'll update you as and when there is a change in the situation. The last point I wanted to make this evening is again this disinformation that is coming from Pakistan.
about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Punch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Punch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. TV पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed in such action, as their history would show. What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है. These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया. भारत सरकार ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के इन दुस्साहसी हमलों का हर स्तर पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी. अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ. चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.